कंपनी क्रिएट हो चुका है, कर रहा हूँ। ये कंपनी का मेन रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट डेटेड चेक का ट्रांजैक्शंस एंट्री करने के लिए। बिजी में तो दिया है, लेकिन बिजी में क्या होता है, स्टैंडर्ड चेक जब प्रिंट होने का टाइम पे बिजी में फ़र्क तो ज़्यादा नहीं आता है। पोस्ट डेटेड डेट तो आपने Alt F4 दबा के वहाँ से पार्टी का फील्ड से पोस्ट डेटेड चेक का डेट तो उठा सकता हूँ मैं। बट प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बिजी ये नहीं कहता है कि वो लास्ट में बोल देता है चेक सब्जेक्टेड टू रियलाइजेशन, समथिंग लाइक दैट इट सेज। बट प्रॉब्लम क्या है, जब पैसा हमारा हाथ में नहीं आता है तो रिसिप्ट में ये रेगुलर रिसिप्ट या पेड रिसिप्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता है। यही प्रॉब्लम मेरा दोस्त ने फेस किया था। उसने मेरे पास बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो बिजी का तो मैं आल्टर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए आल्ट्रेशन तो करके दिया है। आल्ट्रेशन नहीं, डिज़ाइन तो, रिसिप्ट डिज़ाइन तो अलग बना चुका है। अब हम वो अलग डिज़ाइन बनाने का प्रोसेस सीखेंगे। नॉर्मली ऑटोमोबाइल शॉप में एक ओनर को 2-3 व्हीकल रहता है, 2-3 व्हीकल को भी रिपेयरिंग को आता है। पार्टी वाइज आप व्हीकल वाइज रिसिप्ट डाल के वो अकाउंट मेंटेन कर सकते हो या क्लियर कर सकते हो। ये हर ऑटोमोबाइल दुकान का एक ही प्रॉब्लम, ओनर एक ही रहता है, हिसाब अलग अलग रखना है। लेकिन बिजी ने आपके लिए क्या किया है, जनरल लेडजर तो पार्टी करके व्हीकल को सब लेडजर करके ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकता है। अब देखिए, कंपनी को एडिट कर रहा हूँ मैंने। आज़ाद रोड तीर्थहल्ली हो गया मेरा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट शिवमोग्गा कर्नाटका स्टेट, शिवमोग्गा कर्नाटका स्टेट। ये जो पिन कोड नंबर मेरा गांव का पिन कोड नंबर, ये टेलीफोन नंबर मेरा टेलीफोन नंबर, क्योंकि पार्टी को ये डेमो दिखाने के लिए ये यहाँ से फॉर्मेट उठा के उसका सिस्टम में हम डालता है, तब सारा डिटेल्स उसका सिस्टम से उठाएगा। ashokneritur@pendrive.com ये ईमेल आईडी सेव हुआ। अब सेव होने के बाद नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंट, अब पीछे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ। यहाँ आके अकाउंट्स में पोस्ट डेटेड चेक को लेता हूँ, मेंटेन बैक इंस्ट्रूमेंट्स को एनेबल कर देता हूँ। इसके बाद मेंटेन सब लेडजर्स को भी एनेबल कर देता हूँ। सब लेडजर को एनेबल कर देता हूँ। सेव हो गया। अब सेव होते ही अब अकाउंट ऐड, यहाँ ऐड करता हूँ KA05 C123 KA05 EB 3517, ये मेरा मोटरसाइकिल का नंबर है, लेडजर। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ। अब F3 दबाता हूँ। F3 दबा के अब एक लेडजर क्रिएट कर देता हूँ। ऐड, मेरा नाम टाइप कर देता हूँ डेमो दिखाने के लिए, अशोक प्रभु तीर्थहल्ली, जनरल लेडजर, ग्रुप सन्ड्री डेटार, एड्रेस कोई एड्रेस दे दो, महालसा निलय, कार्यगद्दे, संकदहोळे पोस्ट, नेरटूर विलेज, तीर्थहल्ली तालूक, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ये मेरा घर का एड्रेस है, कर्नाटका। पार्टी मैं यहाँ लिखता हूँ अनरजिस्टर्ड। मेरे गांव का पिन कोड डालता हूँ 577432। यहाँ डालता हूँ सेल डेट के लिए 7 डेज, हर इनवॉइस के लिए बैलेंस 7 डेज। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। यहाँ लेता हूँ अकाउंट्स, यहाँ लेता हूँ 4 फील्ड। अकाउंट फील्ड में फर्स्ट लेता हूँ
VIN number, vehicle identification number, VIN number, just like chassis number, VIN number, 16 डिजिट का नंबर, VIN नंबर। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, उसके बाद मॉडल, मॉडल के बाद मैन्युफैक्चर्ड ईयर, ईयर टेक्स्ट सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब सेव हो गया। इतना डिटेल सेव होने के बाद अब मास्टर्स क्रिएट कर देता हूँ, सब लेडजर क्रिएट कर देता हूँ कि ये 05 EB 3517 ये सब लेडजर अंडर ग्रुप अशोक प्रभु तीर्थहल्ली। व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर हियर मैं सिंपली लिखता हूँ एंटर चेसिस नंबर हियर, चेसिस नंबर टू बी एंटर्ड हियर, टू बी एंटर्ड, बस। मैन्युफैक्चरर बजाज ऑटो लिमिटेड, मॉडल प्लैटिना 110 cc, प्लैटिना 110 cc 5 स्पीड गियर, 5 गियर, बस। ईयर 2023 ओके कर देता हूँ। अब ओपनिंग बैलेंस है तो डाल देता हूँ, नहीं तो नहीं है। मेरा केस में डेमो दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं बैलेंस नहीं लेता हूँ। अब हो गया। अब डायरेक्ट इनवॉइस पे आता हूँ। इनवॉइस आने से पहला आइटम ऐड कर देता हूँ, चेन स्प्रॉकेट प्लैटिना 110 cc रोल ऑन। रोल ऑन एक ब्रांड है, 110 cc रोल ऑन। ग्रुप चेन स्प्रॉकेट, प्राइमरी ग्रुप को एनेबल कर देता हूँ। HSL कोड मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं हूँ। अब यहाँ यूनिट डाल देता हूँ, सेट भी ले सकते हो आप, पीस भी डाल सकते हो। यहाँ मैं लेता हूँ सेट। ओपनिंग स्टॉक है तो डिक्लेयर करो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ मैं सेल्स प्राइस लिख देता हूँ 950 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। यहाँ नीचे देखिए MRP 1250 कुछ है, वो 1300। यहाँ टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स प्राइस को अभी N है, उसको Y कर देता हूँ नीचे। अब दूसरा आइटम डाल देता हूँ स्प्रॉकेट रबर। हम कहते हैं कपलिंग रबर, कुश रबर। एक एक गांव में एक एक नाम पे बुला देता है। अब हो गया यहाँ स्प्रॉकेट बेरिंग 6004 KBC। KBC का मतलब कोरियन बेरिंग कंपनी। टैक्स कैटेगरी 18%। मुझे सेल्स से कुछ लेना देना कुछ नहीं है। अगर थोड़ा टैक्स रेट गलत हो गया या HSL कोड नहीं डाला, उसमें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पार्टी का सिर दर्द है, मेरा नहीं है, वो पार्टी देखेगा। अब देखिए चेस पॉकेट को टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स प्राइस को S कर दिया, क्योंकि जो रेट डाला है वो तो फाइनल रेट बन के तब आ जाता है। अब HP रेजर 40 ऑयल, इंजन ऑयल 1 लीटर। अब एक नया ग्रुप बना रहा हो, ऑयल। ऑयल यहाँ पीसेस हो गए। यहाँ क्वांटिटी 1, HP 400 रुपीज़, MRP 475 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट यस 470। सेव कर दिया। अब ट्रांजैक्शन में आता हो, ऐड में आता हो, लोकल मल्टी रेट सिलेक्शन कर देता हूँ। KA 35 ये तो डाल दिया। बेरिंग 6004 एक पीस KBC वो तो ले लिया।
चेन स्प्रॉकेट वो भी ले लिया 1 पीस। बाद में HP रेसर 40 ऑयल वो भी ले लिया 1 पीस। इतना होने के बाद अब एक F3 दबा के अब एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑयल फिल्टर क्या ये कैलिबर नहीं है, ये पल्सर का चलेगा, पल्सर भी नहीं है, प्लैटिना। अब ऑयल का ग्रुप में डालना है, ऑयल का ग्रुप में डाल के यहाँ तो पीस MRP 40 यहाँ होता है 30 रुपीज़। अब सेव कर दिया, 1 पीस डलता है, एक बाइक के लिए 1 ही पीस आता है। अब 1 पीस आ गया। अब Alt F4 दबा के बिल 1540 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोबारा 10 तारीख को आता हूं मैं आके यहाँ से। अब 10 तारीख को आता हो आके बाइक के लिए K03, इस बाइक के लिए एक क्लच केबल सेट लेके जाता हूँ। जब मास्टर नहीं है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्लच केबल सेट प्लैटिना 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 110cc 5 गियर कंफर्ट राइड, 5 गियर कंफर्ट राइड। इतना बोलने के बाद क्लच केबल सेट का ब्रांड सुप्रजीत। सुप्रजीत केबल तो यहाँ नहीं ऐड कर सकता हूँ, मैं सोचता था रैमसन केबल तो ऐड कर देंगे। कुछ भी ऐड करने के लिए प्रोविजन कम हो गया, इसके लिए मैंने क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। यहाँ ग्रुप तो बना देता हूँ क्लच केबल सेट। टैक्स कैटेगरी 18%, टैक्स कैटेगरी 18%। HSL कोड मैंने यहाँ तो एंट्री नहीं किया, यहाँ डाल देता हूँ सेट, क्योंकि वो इनर आउटर सेट सब मिला के आते हैं। यहाँ डाल देता हूँ 140 रुपीज़। अब रेट तो टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स कर दिया। अब यहाँ आके डाल देता हूँ 1 सेट। अब आल्ट अप्लाई F4 दबा दिया। अब 140 रुपये का एक बिल ड्यू हो गया। अब तो पार्टी का 2 बिल ड्यू हो गया। अब यहां आके देखता हूं, रिसिप्ट ओपन कर दिया। रिसिप्ट में मैं रिसिप्ट नंबरिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। अभी हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रेस ओके कर देता हूं। ओके कर देते ही हो गया। अब डायरेक्ट रिसिप्ट में आ देता हूं। आके यहाँ पे लिखता हूं डेट, आज का डेट। लेकिन मैंने पार्टी को व्हीकल बाहर जाने में लिया था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का डेट था 10/4/2025। ये हमेशा हर वर्कशॉप में या हर बिजनेस का जगह में ऐसे ही होता है। सिंगल ओनर हैविंग मल्टीपल व्हीकल्स, सब लेडजर और बे लेडजर बना के इनका अकाउंटिंग हो गया। अब बैंक अकाउंट तो बना देता हूँ 640 53 50 5354 SBI अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहाँ मैं बैंक ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिखा देता हूँ क्योंकि ये डेमो पर्पस के लिए बनाया है। अब यहाँ से आ देता हूँ, नरेशन कुछ नहीं डालता हूँ यहाँ पे मैंने। अब मैंने ले लिया पेमेंट। ये तो मेरा यूनिक आईडी, मेरा आईडी तो यूनिक यही है K05 EB3517। अब बिल नंबर 1 के लिए एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट टाइप चक्का और चक्का नंबर अब डालना पड़ेगा। अब इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो नंबर आ रहा है उस नंबर को तो डालना पड़ेगा। ये नंबर मुझे
अब सेव कर देता हूँ यूनियन बैंक। तो ये एक्चुअली ये गलत है, वो यूनियन बैंक नहीं है। चेक की ट्रांजैक्शन होता है स्टेट बैंक से, तभी यूनियन बैंक जस्ट डेमो दिखाने के लिए मैंने बस डाल दिया है। अब हो गया। अब यहाँ पे आके अब मेरा नाम व्हीकल का नाम में टाइप कर दिया, तो बिल 2 बिल बाकी है। आपने पोस्टेड रिसिप्ट तो पेमेंट कर दिया है, फिर भी यहाँ लेडजर में वो डेट के अंदर ये जमा नहीं होता है, इसलिए आपको पार्टी का बैलेंस वैसे ही दिखते ही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ, रिसिप्ट में आता हूँ। ये रिसिप्ट का नाम लेता हूँ, न्यू डिज़ाइन, सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब सेव करने के बाद कॉन्फ़िगर में आता हूँ, यहाँ आके फर्स्ट टाइप कर देता हूँ लोड डिफॉल्ट पे हेडर का पोर्शन रख लेता हूँ, नीचे का बॉडी का पोर्शन काट देता हूँ। हटा लिया। अब हटा के एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। आपके देखते ही मुझे इतना तो मेरा तो मिल गया, रिसिप्ट नंबर भी आ गया, रिसिप्ट डेट भी आ गया। अब क्वेरी जो मैंने पहले ही लिखा था, ये ऑलरेडी एक बार रन करके देखा था मैंने, सारा क्वेरी हटा देता हूँ, हटा देता हूँ। अब नया क्वेरी लिखते शुरू कर देता हूँ। आर डेट सेलेक्ट tran1 डॉट डेट सेलेक्ट, यहाँ हटा के अब लिखने शुरू कर देता हूँ। tran1 डॉट डेट फ्रॉम tran1 where tran1 dot ojo type is equal to 14, ojo type is equal to 14। एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब तो आंसर आ गया। आंसर आते ही इसको फॉर्मेट तो कर दिया। देखिए मैंने कैस्ट फॉर्मेट ऑफ tran1 डॉट डेट, ये देख रहा हूँ ये आंसर तो मुझे ठीक से नहीं देने वाला है। अब प्रिंट प्रीव्यू में एक बार चेक कर देता हूँ। नहीं, ईयर दे दिया तो वो कर, जो फॉर्मेट मैंने लिखा था वो गलत था, इसके लिए ठीक से आंसर नहीं आया। अब उस फॉर्मेट को भी दोबारा हटाना पड़ेगा। अब देखिए ये आंसर से पूरा परफेक्ट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्ले में आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा देता हूँ। आर डेट हो गया। अभी नया क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे। पेन, कोई नाम आप दे दो, वही नाम से क्वेरी पे रिजल्ट पे जो आपको रिजल्ट चाहते हो वहाँ वही नाम से बुला दिया तो बस। नाम नेम यू कैन गिव एनी नेम, दैट डजंट मैटर। I'm just going to write a query here. Select, I'm starting with a case statement. Case when tran1 dot stock updation date is equal to tran1 dot date. When tran1 dot stock updation date is equal to tran1 dot date, then my condition is regular receipt. It could have been, I could have been written just receipt, else always else post dated receipt. See the case when tran1 dot stock updation date is nothing but your post dated check date, that cannot be equal to tran1 dot, that is voucher date. When those two dates are same, that means that will be a regular receipt. See here in this case my answer is post dated receipt. This I am using as a title. Now this is the case.
I want to check the length of the string. Now I will run the query. For designing purpose, it's 18 characters. It's holding 18 characters. So that case statement will be running only in EC and SC models. That will be only in SQL database, and it will not run on Access database. So those who are having Access database, it will be a waste of time for them. If they want to mention post dated report, then they have to use an optional field. In that case, they have to use an optional field here. Now I'm going to receipt design. Here second line is receipt comma 13, that I'm removing that. There I'm going to make a space of 18, underline on, underline off. That is, I should have to make a space of 18. My query name is pen, and it's going to have 18 space, 18 comma C. Now my total width, unbound uncompressed characters. See, second line is not having either condense on or CPI tool on, so it's an uncompressed character. Now out of 80, I have to reduce 18, then divide it by 2, then that comes to 31. So if I check my preview, my report title has been changed to post dated receipt. My report has been, now that portion is over. Now let us check. Let me write one more query. My query name is host, HOST, host. Any name you can give. Here I'm going to write select. Now I'm going to write a subquery. Select, that capital letter, small letter, doesn't matter. My query is being written as select name from master1, where master1.code is equal to, simply I have written as code. That will be working, no problem, that will not create any problem. But here in case of sales invoices, I'm going to write as tran2.cm1, but in accounting vouchers I have to write tran2.mastercode1. mastercode1 of any table, that is of master1 table, that will be equal to tran2.mastercode1 in case of receipt, journal, other entries. But in case of sales invoices, it cannot be like that. Here I have written as where tran2.voucher type is equal to 14, and okay, of course, and tran2.cash flow is greater than 0, comma, select m2.address1 from master address info as m2. See, I'm not going to join any two tables, just I'm going to write a subquery. From the subquery, I'm going to retrieve all the values that is associated with this master from the master address info table. See, I could have joined both tables, that doesn't matter, but I prefer to write a subquery and retrieve all the data associated with this particular account master. Now comma, I will put one more comma. Here master address 2, m2.address2, then again I'm going to put a comma, then I'm pasting it, m2.address3, comma, this is what you are seeing on the screen. Then I'm going to write m2.address4. Now with this I want to mention even party mobile number 2, so comma, here I will write, instead of m2.address1, here I'm going to write m2.mobile. That's enough. That is the table name, and that is the field name of that, from that particular table. See, here I got the mobile number as 94483-43143. Now I'm going to take this answer in printing, so query result in printing. Now we'll write where tran2.voucher code is equal to @voucher code voucher code, and that is the remaining sentence continues as it is. Now I'm going to, my query type will be voucher header accounting, because these are all accounting vouchers. This is not an inventory voucher, this is being an accounting voucher, just like journal, cash,
receipt, payment, debit note, credit note, these are all coming under accounting vouchers, under the category of accounting vouchers. So as such, in order to have the result to be printed in my document, I have to take my query type as voucher header accounting. See here, I'm going to enter SQL query text type, my name, that is the name host, I think, host semicolon, row is equal to 1 semicolon, column is equal to 1. This is the standard procedure. You can read that procedure given in help. So I'm copying this. Now I'm going to get my customer name. See, we have built everything according to that vehicle name. Whatever the space that vehicle has consumed, we have built it according to vehicle name. Now we are putting the receipt in the name of the party, that is in the name of the owner. At the time when we are putting the receipt in the name of the owner, I have to print the vehicle number associated with this particular vehicle. Okay, now let us check in the preview. When we check it in its preview, the preview comes like, no, don't forget about the right side, just concentrate on the left side. Party is Ashok Prabhu Thirthahalli, and that is my residential address. Okay, now let us move ahead. Now I want to add mobile number, so mobile number is being 6th, so I will add one more line here. Query will be host, column number will be 6, so I'm going to add column number 6. So now let me check the result in preview. In preview, I got the mobile number as 94483434143, that is someone unknown. Now I'm going to add one more query. My query name this time will be HVR. The capital letter, small letter doesn't make any difference. Here I'm going to write select star from tran2, where tran2 dot voucher type is equal to 14, tran2 dot voucher type is equal to 14 and is equal to 14. That means I'm referring with receipt invoices. Okay, I got this much of information. Now after viewing this information from this particular tran2 table, so now I'm going to start writing my query, and tran2 dot SR number is equal to 1 and tran2 dot cash flow is equal to tran2 dot cash flow is not equal to 0. I is equal to 0, sorry, it is being equal to 0. Now we have two records, one is plus, other one is minus at value 1. One value is greater than 0, other value is less than 0. That is, something is going to be debited and something is going to be credited. Okay, now let us move ahead. I wanted to study that particular table. Now I will modify my query as, okay, after viewing this result, now I'm going to modify the query. Okay, now here, and tran2 dot value 1 greater than 0. See, that's what I said. And tran2 dot I1 is equal to 0. No, it's not I1. I1 is greater than 0. I think I would have to written L1 is not there. Now I have an answer. I have filtered out the result. Actually I wanted that master code one. Now I'm going to write and value 1.
select in the second line. Now I'm going to remove that ostrich mark, no, that star mark. Select m2 dot address 1 from m2 dot address 1 from master address info as m2, where m2 dot master code is equal to tran2 dot master code 1, m2 dot of1. It's not address 1, it is m2 dot of1. That is, here I have mentioned as chassis number to be entered while creating the item master. I, instead of writing any value against VIN number, perhaps you may remember now, VIN number, that is vehicle identification number. When I have created an item master with my motorcycle number, I'm going to retrieve all the optional field values associated with my motorcycle number. Like that, for any party you can yes, this is the chassis number to be entered. That may be VIN number, I don't know, I have to see my RC book, but here just I entered the value as chassis number to be entered. Now vehicle brand, manufacturer or related activities that has come over there. Now here where tran2 dot, to take it out to printing, I have to write as tran2 dot voucher code is equal to voucher code, that I have written, and query type is voucher header accounting type. Here I have started writing my query. My query name is being small letter, capital letter, doesn't matter. As I told you earlier, HVR semicolon row is equal to 1 semicolon column is equal to 1. After that column is equal to 1, you have to put a column, comma, and then you have to write, that is whatever the value. I can provide there 27 spaces for printing that information. The maximum space available there for me is 27. So against that chassis number to be entered, I'm going to add the value. Now going ahead, see here from tran2, it's okay, this is written now. Now I'm cutting this and I have to check what is there. Select, I want to enter something. What is that something? That is, some information is missing over here. So that is, select n name from master 1 where code is equal to tran2 dot master code 1. This is missing. Now what is that name? Name is nothing but the register number of that vehicle. That information I needed. I can provide who is the manufacturer, what is the model, the year in which it was brought, and the fuel, any other associated optional field I can take it for printing. But here I wanted to print that item name, a vehicle name. So I did like that. Here is again, here now I have to provide vehicle name. So how do I do that? I do that by copying this query and putting column name as 5. I will just change my column name to 5 and I will provide a space of 27 characters has been provided. Now let us check with the print preview. If we check it in our print previews, that existing query I altered. So my answer is, now I got that KA05EB3517. So that is vehicle. Okay, now that answer we have got. Now model year also we have got, year, model, everything we have got. Now we have to alter the query. Now that part is over. Now again let's go back to display. Here I'm going to write one more query. That name will be GTX. Any name you can give, to that extent any name you can give, and in the printing or anywhere at the report you have to call that report
that query result by the same query name. Select tran2.value1 from tran2, where tran2.ochotype is equal to, where tran2.ochotype is equal to, where tran2.i2 is equal to 0, and tran2.sr number is equal to 1. Now after writing this, I'm going to run this query. I have this much of answers, unwanted answers, and now I'm going to write as and tran2.ochotype is equal to 14. Now my query result will be restricted to a few more lines. There are only two type of records. One is less than 0, other one is greater than 0, comma tran2.star. Star is, now it will be showing me everything. That is, now I should write now tran2.i1 is equal to 0. After making i1 is equal to 0, I'll be having only one line, and here I'm going to tran2.mastercode1 comma tran2.value1. This is what I have to write now. So I want only these two result from this particular query. After doing all my filtration work for the value 1, now I'm going to write it as absolute of tran2.value1. I want now absolute of that. I don't want any sign, plus or minus sign, so that gives me absolute like that. Now I'm going to write a subquery for the first column as select name alias from help1. No, it will not write, so it will give me a lot of error messages, because help1 table actually earlier I was using, later I stopped using that help1 table, because help1, see, this is the result. So this is the reason. Because of this reason I stopped actually using help1 table again and again. Sometimes it may be needed, where master1 dot from master1. Oh, it's wrong, it will not run. It is absurd. The statement is not having any meaning at all. Now select name from master1, where from master1 I have to add where code is equal to. No, it will not run again, it will not run again, it will create a problem. Where help1.code is equal to. No, again it will not run. That's what I said. See, it causes problem again and again. Now I have to go back to master1 table, select name from master1, where master1.code is equal to, where instead of help1 I will write as where code is equal to, and that is the answer. This is that account number. So money is getting transferred to this particular account, so I want to print that account number, because this is we have received the money through check, as it is being the check. If it is a cash, it will be, my answer will be cash. If it is check, this particular bank account number come. If I have one more bank account, then that, and if I use that second bank account name in making receipts, then that second value will come. Now my query type, as I said earlier, it should be voucher header accounting only. Now saved. I will call this GTX query in receipt design. Receipt, here receipt design. I will start typing text. My text result is, my query is GTX. Small letter, capital letter, as I said earlier, won't make any difference. You can write as it is. Now my first query is account number, and second one is account number or cash. In particular case, it's being a bank account number, which is obvious by viewing on the screen. You can now see that. See, now I'm pushing that 64053540255 bank account number to right side. I'll be pushing it towards right side.
Here I will use CPI tool on and CPI tool off, and this is the number oriented, and that name is HVR. No, it is not HVR. By mistake I wrote it here as HVR. It must be GTX. Okay, my answer will be 0 in this particular case, because that character does not exist over there at HVR table, and my answer shall be 0. As I told you, my answer has come as 0. Now I'm going to alter this query. It is not HVR, it is GTX. Now after altering my query, I'm going to get my value as 1540, which is debited. Now the value has come as 1540. Now let us, it's already run. Now I'm going to write one more query here, that is end. My query is select tran1 dot stock updation date from tran1, where tran1 dot voucher type is equal to 14, voucher code is equal to @ where voucher type is equal to 14. This is the query. I'm going to run it. So my answer has come as 10. That is my post dated checks clearance date. That there on that particular date I'm supposed to be presenting it to the bank. Now I'm going to write here as case when tran1 dot stock updation is equal to tran1 dot date, then I will put my result as blank, else tran1 dot stock updation date. Here end, and I'm going to add the case statement. Again there's a mistake. So where that is the mistake, that I have to check now, where I have to remove that and I'm going to run this query. My answer is now 10/4/2025. I don't want to use any format function over here. So as such, where tran1 dot voucher code is equal to @voucher code, and now I'm going to add and tran1 dot voucher type is equal to 14. Here my query type will be voucher header accounting. Now it is saved. Okay, now it is saved. Now let us use this query, let us use the result of this query here in receipt printing. Post dated check collection date. So when I say post dated check, after saving the receipt as PDC, automatically all this data will come in the report. The name of that query is being end. It is now 26. Okay, now here I'm going to alter my final result as 56. So no, that is not 56, it's 46. No, this is a mistake, because this mistake has happened on first line. I wanted the answer on the last line of the receipt design, whereas my answer has come on the first line. See, now we got the answer, but it is not okay. So as such, I'm pushing it towards last line, altering the query. Now I'm going to remove this line from here. Cut removed. Now for new company will be changed down to 46.
96. Now I'm going to save it. Okay, now still even now also this is not within the design limit. It has gone outside the paper width. Now I have to recheck every line by line to realize what is the mistake. It is 56 and now 46. Okay, now it has come within limit, and in print preview now I can see better look, but post dated check collection date 10/4/2025, that's what you can see now. Still I'm going to alter my query. Then it should be 40. It's not 46, it should be 40. After making it 40, my report now it's coming all right. See, now you can view the result. This is the result.